function overloading. Let me explain you what function overloading is. Uh, when you have the same named function in a program, in the same program you have more than one function with the same name. Like in this program, let me show you. I have taken add name function, add, and this add function is how many? I've taken 4 add functions. That means the name of the function is same, which in C you cannot have the same name function, but here you in C++ you can have the same name function more than once in the same program, but there has to be difference in either the number of parameters or the type of parameters that are passed to the function. Let us suppose here I am taking first function as add. There are no parameters in it. Okay, this is a first category function. Then I have again taken add function. In this I have two parameters, integer type x and integer type y. Then I again have add function again which has two parameters. That means the number of parameters are same in both these functions, but the data type of the function is different. This is float x and float y. This was integer type x and integer type y. So the data type is different in these two functions. And what I told more is either you have to have different data types of the parameters or the number of parameters should be different. So last which I have taken is fourth function add again, in which I have three parameters, integer type x, integer type y and integer type z. So you can have more than one function with the same name, but they have to differ in the number of parameters or the type of parameters. So the first add function does not have any parameter, so number of parameter is 0. The second add function has two parameters which are both integer type. The third add function has two parameters again. The number of parameters are same, but they are different data type, float and float. And the fourth I am having is three parameters which are three integer types. I can also have mix of, like one is integer x, the other is float y. One is float x or other is float y. This kind also I can have. That means the data type of the parameters, either it has to be different or the number of parameters is to be different. If you have such kind of function in C++, we call this concept as function overloading. What it is called as? क्या कहलाता है ये? फंक्शन ओवरलोडिंग. हाँ जी. सो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब पता चल गया. ये सी में नहीं कर सकते थे हम. सी में इफ यू ट्राई टू मेक मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम, it will give you an error that you are redefining the function again in the program. So it does not allow you to have more than one function with the same name. Maybe you are giving different parameters to the function, but it is not allowed in C. In C++, you have this extra word that you can have more than one function with the same name, but the data type or the number of parameters passed to the function should be different. So if it is, different from each other, then we can say this is a function overloading. All these four functions are with the name add, but the parameters are different. Okay, so let me just explain you here. I have taken these four functions. The first function is doing what? It is the function of first category which has no parameters and which does not return any value. In this, inside this function, the local variables I'm having is integer type x, which is initially 10, y is 20, and there is a variable s for the sum. Now I'm calculating the sum s equal to x plus y. I'm trying to show the output on screen. So it will show you sum is, and it will give you 10 plus 20, 30 will come here. The second function I have with the same name add, but this has two parameters. That means from where the function will be called, you'll be passing parameter value to that. Okay, so that will come in x and y. In this you have s as the local variable of this to find the sum. Again you are adding the two values that goes in s, and this statement comes on screen, sum is equal to and value of s. Okay. Now third function again with the name add, but it has two float values. That means float values are which one? That is decimal values.
So 2 decimal values you'll be sending from where you'll be calling this function, and those values come in x and y, and you are taking s as float type here, and you are trying to add the two values, and then you are printing this value on screen. And the fourth function which I have taken for 3 parameters, integer type x, integer type y, and integer type z. That means when I'll be calling this function, I'll pass 3 values to the parameters. The first one will go in x, which is integer type, second will go in y, and third will go in z. Inside it, I have s as variable, local variable for the sum. It will calculate the sum x plus y plus z, and the sum will be displayed on screen with this statement. Okay. Now, when we run the program will start from main. It will not start from the functions. It will start from the main function, because this is the entrance or the gateway of the program. Main के अंदर जैसे ही control आएगा, it will first declare a variable s. I do not require this, so I can delete this because I do not require here. What I am doing here is I am taking float type a, b, two variables, because one function I am using the parameters as float type. Okay, these are decimal values. Now I am calling the function add. ये कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा इस केस में? जब ये ऐड के लिए पहली स्टेटमेंट चलेगी ये वाली, तो यहाँ से कौन सा फंक्शन कॉल होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा कॉल होगा? फर्स्ट वाला. ठीक है, तो ये ऐड में जाएगा. x की वैल्यू 10 है, y की 20 है, सम करेगा और सम 30 डिस्प्ले हो जाएगा. कंट्रोल वापस मेन में आ जाएगा, जहां से गया था उसकी अगली स्टेटमेंट में यहाँ पर आ जाएगा. अब ऐड फिर से कॉल हुआ और ऐड को दो वैल्यूज हमने पास करी. ये दो वैल्यूज किस तरह की हैं, किस डेटा टाइप की हैं? 100 और 200 इंटीजर टाइप. तो इस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा इनमें से? जो मैच करेगा सेकंड वाला. ठीक है, तो इसमें ये जाएगा 100 और 200 आ गए, सम 300 आ जाएगा, 300 प्रिंट हो जाएगा. वापस कंट्रोल जाएगा मेन के अंदर. मेन में अब इस थर्ड वाले में आएगा. यहाँ ऐड आप कॉल कर रहे हो, इसको आप दो पैरामीटर्स भेज रहे हो ए और बी. ए और बी किस नेचर के हैं? फ्लोट टाइप. ठीक है, तो 10.10 ए में जाएगा और बी से जाएगा 12.10, और ये पैरामीटर पास होके कहाँ पे पहुंचेंगे? कौन से फंक्शन में? जो मैच करेगा. तो हमारा मैचिंग फंक्शन कौन सा है? ये वाला. ठीक है, तो फ्लोट x में चला जाएगा 10.10 और y में चला जाएगा जो भी उसकी वैल्यू है. दोनों ऐड होंगी और ऐड होके ये फ्लोट वैल्यू आपको डिस्प्ले कर देगा. और फिर वापस ये मेन में जाएगा. अब हमने कॉल किया ऐड फंक्शन, जिसको 3 पैरामीटर भेजे हैं, 11, 12 एंड 13. तो ये क्या करेगा? ये इसका मैचिंग फंक्शन ढूंढेगा. मैचिंग फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा. इसे तीनों वैल्यूज यहाँ पैरामीटर में आई, एस में ये तीनों वैल्यूज ऐड हुई और सम आपका डिस्प्ले हो गया. नाउ let me compile this program first. Let me run this program. So you can see here the result. The first one is giving 30. That was with the help of the first function. Let me just take up this so that you can compare it. So the first one is giving 30. पहला वाला कॉल हुआ था. दूसरे वाले में 100 और 200 गया, तो ये 300 आ गया. तीसरे वाले में फ्लोट वैल्यू भेजी आपने 10.10 और 12.10. So this will be 22.20, पर ये क्योंकि फ्लोट टाइप है तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपको दिखाएगा, तो 22.2 आ गया. और लास्ट वाले में ऐड आपने कॉल किया, जिसमें 3 वैल्यूज भेजी, 11, 12 और 13 वाली. तीनों वहाँ गई. जब ऐड होंगी तो ये 36 सम आपका डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम is a program for showing function overloading. That means in C++ you can have more than one function with the same name, but the parameters has to be different in either the data type or the number of parameters, so that you can have in the C++ programming part. This concept is function overloading, and when we'll move ahead to the other topics, we'll also come across a topic of function overriding. So there's a difference between function overloading and function overriding. Function overloading में तो मैंने आपको बताया कि सेम नेम फंक्शन होंगे लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, है ना, डिफरेंट इन डेटा टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स. बट फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है? फंक्शन का नाम भी सेम होता है और उसमें जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, बट उनमें डिफरेंस कहाँ होता है? जो अंदर फंक्शनैलिटी होती है सिर्फ वो डिफर करती है.
ठीक है, सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरराइडिंग। ये हम करेंगे जब पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे, ठीक है। एंड इस वाले कंसेप्ट में जो फंक्शन ओवरलोडिंग हमें मिलता है, ये बेसिकली आपका कंपाइलेशन टाइम पर हो जाता है, यानी जो आपके पैरामीटर्स अटैच होते हैं, ठीक है, वी कॉल इट एज यू नो पॉइंटिंग और रेफरेंसिंग टू द arguments being passed, so that attachment happens at compilation time. But in overriding, which we will be doing in polymorphism case, there you will have the function will be attached at runtime. That means when you run the program, at that time it makes out which function is to be called, because there the functions are similar in every sense, only the functionality of the function is different. So that concept will be called as function overriding, and this is called as function overloading. This concept basically of binding the function with the parameters, which I have just said you that one happens in compilation time, one happens in run time. जो compilation time पर होता है उसको बोलते हैं static binding, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको जो compilation time पर होता है? स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। और जो रन टाइम पर होता है, जो फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? रन टाइम पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन वाला तो स्टैटिक बाइंडिंग हो गया, रन टाइम वाला क्या कहलाएगा? डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? कंसेप्ट समझ आ गया? Yes, sir. Yes or no? Okay, if you Yes, have ma'am. understood this, you can please write down this program. Okay, just give me a second.